elimination types of product, right? So two types of product produced by alkyl halide, two types of product produced by alkyl halide. One is substituted product and second is addition product. One is substituted product and second is elimination product. It depend on types of reagent. It depend on types of reagent, right? तो जो आपका एल्किल हैलाइड होता है वो दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स को देता है, एक आप सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा और दूसरा क्या देगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट. इट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ रिएजेंट व्हिच वी यूज, राइट? If we use strong base like alcohol, right? If we use strong base, if the condition is a strong basic condition or more basic condition, right? So then they always prefer elimination reaction. Then they always prefer elimination reaction, right? So then they always prefer to give elimination reaction, right? But if the base is weak, for example, water is a weak base. You people already know water is a weak base. So if, right, we do reaction in aqueous medium, right? Aqueous KOH. If reaction of aqueous KOH with alkyl halide, then there is always substituted product, right? Because aqueous or water is a weak acid, because aqueous or water is a weak base, right? But if we use strong base, if the reaction takes place in presence of alcohol, अगर reaction alcohol की presence में होती है, alcoholic KOH की, अगर आप alkyl halide से reaction करते हैं तो आपको क्या मिलता है, elimination product. फिर आपको क्या मिलता है, elimination product, right? तो strong base, you can see here, strong base attack on proton or more basic nucleophile prefer elimination reaction, right? तो strong base अगर होता है तो वो हाइड्रोजन जो होता है उस पर भी अटैक करता है और उसके बाद आपको क्या मिलता है, elimination product मिलता है, right? लेकिन अगर वीक बेस होगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है, राइट? तो इफ आई टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करता हूं तो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिक कंपाउंड रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ये जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, राइट? नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन भी सेम जैसे एडिशन रिएक्शन होती है वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, राइट? सेम लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है. वहां पे आपने पढ़ा एज यू नो SN1 टाइप रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होती है, E1 टाइप रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन मैकेनिज्म. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन मैकेनिज्म, राइट? तो इस तरह से, राइट? X इज लिविंग ग्रुप फर्स्ट, तो E1 में क्या होता है, फर्स्ट X विल leave out, same like SN1 type reaction में first your compound, your alkyl halide convert into carbocation. So how they convert into carbocation, when X minus will remove, right? So this is first step, same like SN1, and in second step H will remove out, right? At second step में क्या होगा, H will remove out, right? So in this way this is two step reaction, right? And this is called E1 mechanism. इसे क्या कहते हैं, E1 mechanism, same like SN1 mechanism. Now if we talk about E2 mechanism, जब हम E2 mechanism के बारे में बात करते हैं तो two groups leave at same time simultaneously two groups leave out, right? Simultaneously एक साथ दो ग्रुप क्या हो जाते हैं, लीव आउट होते हैं. अगर आप SN2 की बात करते हो तो simultaneously one bond form and second bond break, but here two bonds simultaneously break, तभी तो elimination होगा when two bonds simultaneously break, right? So same like SN2 type mechanism, here also formed transition state, right? तो same like जैसे SN2 type reaction में transition state बनती है वैसे ही इसमें E2 टाइप मैकेनिज्म में क्या होता है, E2 टाइप मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, राइट? तो सेम लाइक दैट, राइट? बट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड, स्पेशली एल्कोहलिक KOH रिक्वायर्ड. एल्कोहलिक कंपाउंड, एल्कोहल चाहिए पड़ता है इस रिएक्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. एल्कोहल क्या करता है, OH को इजीली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, राइट? तो इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. एक्वस अगर होगा, वाटर होगा तो फिर वीक बेस होगा, राइट? So now you can see alcoholic KOH. You can see here alcoholic KOH. If we talk about the mechanism of E1 reaction, right? तो अगर हम E1 mechanism की बात करते हैं तो मैंने पहले क्या, E1 और SN1 कौन देगा, सेम जैसे SN1 को टर्सरी देता है वैसे E1 को भी कौन देगा, टर्सरी देगा, राइट? तो टर्सरी गिव E1, राइट?
So this is tertiary alkyl halide. You can see this is tertiary alkyl halide, right? So when tertiary alkyl halide react with alcoholic KOH, when tertiary alkyl halide react with alcoholic KOH, then right, Cl will remove out, along with Cl H also remove out, right? Along with Cl H also remove out, right? And then they convert into alkene, or then they convert into alkene, right? During this process, because HCl will remove out, right? इस process में HCl निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा with negative charge, और H plus यहाँ से निकलेगा, right? And then they convert into alkene, right? So this reaction is called elimination reaction, because a small molecule HCl will remove out during this process, because HCl will remove out during this process, right? Now you can see what about the mechanism. Mechanism क्या होगा? You can see here, right? यहाँ पे देखिए आप, तो आपका जो एल्कोहल होगा इथेनॉल, दे में भी इथेनॉल, आपका एल्कोहलिक KOH है ना, तो ETOH react with OH minus. OH minus कहाँ से आएगा? KOH, right? So that react with OH minus, then they convert into OC2H5. इसमें convert हो जाएगा या OC2H5, ethoxy ion में convert हो जाएगा, right? Now this ethoxy ion attack, right? Now this ethoxy ion, now you can see here, right? इसको देखिए आप, this is your tertiary alkyl halide. In first step they convert into carbocation. पहले स्टेप में वो क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. Cl will remove out and they convert into this type CH3, CH3, CH3 and plus charge, right? Tertiary carbocation में convert हो जाएगा. Same like in SN1 type mechanism. तो पहला स्टेप here, पहला first step exactly same like SN1 type mechanism. Here first step exactly same like SN1 type mechanism, right? And in second step, because OET, OC2H5 means OET, right? Ethoxy ion, right? Ethoxy ion react with H, right? Ethoxy ion is work like a strong base, and then they attack on this hydrogen, right? And then hydrogen with plus charge move out, right? Hydrogen with plus charge move out, and then this sigma bond convert into pi bond. Then this sigma bond convert into pi bond, and then they convert into alkene, and ETOH, C2H5OH will remove out, right? So this is about the mechanism of E1 type, right? E1 type mechanism, right? Here you can see tertiary alkyl halide, right? CH3, CH3, CH3 and Cl, right? Slow reaction, it is a slow step and rate determination step where they convert into tertiary carbocation. Why they convert into tertiary carbocation? क्यों वो टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है? वो टर्सरी कार्बोकेटाइन में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि उसको पता है जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है. उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में आप देखिए इन सेकंड स्टेप यू पीपल ऑलरेडी नो C2H5OH ने KOH से रिएक्शन की and then they convert into C2H5O minus, right? So ethoxy ion attack on this hydrogen, right? Attack at this hydrogen. इस हाइड्रोजन पे वो अटैक करेगा. Then ETOH will remove out, right? Ethanol, right? Remove out हो जाएगा because ethanol behave like a catalyst, क्योंकि इथेनॉल एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये रिमूव आउट हो जाएगा, राइट? एंड ये जो सिग्मा बॉन्ड है देयर दैट कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, राइट? ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इधर से इधर को चले जाएगा, राइट? And then they convert into alkene, right? So this is about the mechanism of E1 type reaction. Mechanism of E1 type reaction, right? You already know, like SN1 type mechanism, it is preferred in case of tertiary, then secondary, then primary, and not possible in methyl. Methyl and primary actually they are not possible. They are not preferred to give SN1 type mechanism and also E1 type mechanism, right? So tertiary maximum time give E1 type mechanism, right? It depend on condition. I already told. ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. अगर एक्वस केवेच होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर आपका एल्कोहलिक केवेच हुआ, अगर आपका क्या होगा? एल्कोहलिक केवेच हुआ, तो then they prefer to give your SN1 or E1 type mechanism, right? Now you can see next E2. If I talk about E2, अगर मैं E2 की बात करता हूं तो वहां पे क्या होता है? जो आपका ये एल्किल हैलाइड होगा ये प्राइमरी टाइप का होगा, राइट? नॉट मिथाइल, इट इज प्राइम बिकॉज 2 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर डबल बॉन्ड, राइट? डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए. इट मींस मिथाइल तो कभी भी नहीं देगा, राइट? तो प्राइमरी ऑलवेज प्रिफर टू गिव E2 टाइप मैकेनिज्म बिकॉज
they cannot convert into stable carbonate because they cannot convert into stable. तो जो E2 जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है वो कभी भी हो जो इलिमिनेशन मैकेनिज्म देता है वो किस तरह का देता है E2, जैसे सेम लाइक SN2 देता है, राइट। तो जो प्राइमरी होता है वो SN2 टाइप भी देता है और वो E2 टाइप भी देता है। फर्स्ट स्टेप सेम होता है, राइट, यू कैन सी हियर, राइट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, राइट। तो यहां से क्या होता है, Cl will try to move out and E2 attack on this hydrogen, राइट। E2 इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, राइट, E2O, राइट, इथॉक्सी ग्रुप होगा वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एंड Cl also try to remove out, मतलब साइमल्टेनियसली दो ये E2O minus attack on H, it means removal of hydrogen and removal of Cl will simultaneously takes place, right? So then they convert into this types of transition state. इस type का transition state बनेगा, right? You can see this types of transition state, right? Where Et2O attack at this compound or tertiary alkyl halide. This step is slow step. You people already know this step is slow step. And it is also called rate determination step. इस step को आप rate determination step भी कहते हो। slow step होता है, rate determination step होता है। अब आप देखिए, now start bond formation between H and ETO. ETO और H के बीच में bond formation start हो गया, right? And यहाँ पे देखिए CH2 and H bond breaking start between CH2 and H, इन दोनों के बीच में bond break start हो गया है। And now the bond formation between CH2 start, bond formation CH2 के साथ start हो गया है, right? And यहाँ पे देखो bond break between C and Cl is start, right? इन दोनों के बीच में bond break start हो गया, right? तो bond formation and bond breaking, right, simultaneously takes place. यहाँ पे bond formation और bond breaking क्या हो रहा है साथ साथ, ये वाला bond बन रहा है, right, HOET, इसके बीच में bond formation हो रहा है, CH2 के बीच में bond formation हो रहा है, राइट, CH2H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड CH2Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इट मींस दो बॉन्ड बन रहे हैं और दो बॉन्ड क्या हो रहे हैं इस प्रोसेस में, ब्रेक हो रहे हैं, राइट। प्रोसेस चल रही है जिसमें दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, राइट। तो साइमल्टेनियस, यू कैन से दैट साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स, राइट। यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, राइट। एंड एट द एंड, राइट, OETH will remove out, ETOH will remove out, Cl will remove out, and CH2 double bond CH2 will remove out, right? So means alkene formed. It means at the end alkene will formed. Ethanol as a catalyst, it will remove out as it is, right? And Cl will also remove out, right? So this is the reaction. This is the reaction. And because in first step, क्योंकि इस reaction में in first step your ethanol, right, ETO minus ethoxy ion and your alkyl halide participate. It means two molecule, one of the ethanol, that is ethoxy ion, and second of your alkyl halide participate. So this is called second order mechanism. So this is called second order mechanism. So it is called E2, right? Second order elimination mechanism. This is called second order elimination mechanism, right? Now rate equal to KRXB, right? It means it is second order, right? Because here alkyl halide important, that affect rate of reaction, base also important, that affect rate of reaction, right? तो इसका जो ऑर्डर है वो दो है, बिकॉज इफ यू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर आप एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज, एंड इफ यू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ बेस देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंज. तो इथॉक्सी इज ए, you can see here ethoxy is a base, strong base, and you can see here alkyl halide as a substrate. So it is second order reaction, right? And this transition state is important. At the end they will convert into CH2 double bond CH2. Now after that, next one, elimination mechanism, right? I think it should be clear also. E1CB, this is called E1CB. E means elimination, 1 means first order, C means carbene ion formation, CB means conjugated base mechanism. This is called E1CB. It means it is first order elimination reaction where we required
conjugated base. It means for this reaction we require conjugated base, and this reaction is also called carbene mechanism. इस reaction में क्या बनता है, कार्बेनाइन बनता है, इसलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कार्बेनाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं, राइट। आपने देखा E1 टाइप मैकेनिज्म और SN1 टाइप मैकेनिज्म, उसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, राइट। दूसरी वाली जो होती है SN2 जो होता है या E2 जो होता है, उसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। बट इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वेयर कार्बेनाइन एज ये इंटरमीडिएट फॉर्म, राइट। तो कार्बेनाइन में, सो इट इज कॉल्ड कार्बेनाइन मैकेनिज्म, इसको कार्बेनाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं, सिंस इंटरमीडिएट इज कार्बेनाइन, बिकॉज हियर कार्बेनाइन इज ए इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस मैकेनिज्म, द H लीव फर्स्ट एंड देन X. This is important point related to this mechanism. इस mechanism में first H will leave and then X. पहले हाइड्रोजन निकलेगा, H plus निकलेगा, then your alkyl halide convert into carbene and then X will remove out. Then X will remove out, X minus will remove out, right? So carbene, so it is called carbene mechanism because here carbene intermediate is formed, right? This is two-step mechanism. You can see this is two-step mechanism. For example, right, you know, if I talk about this mechanism, right, so for this types of mechanism we required some resonance or inductive effect group, right. For this we required resonance or inductive effect group, right. Negative resonance or negative inductive effect group, right. Why we required, right, because you know, because carbene, because the intermediate is carbene, because इसमें जो intermediate बनता है वो क्या बनता है, carbene बनता है, तो we want stable carbene. How it is possible, when we use negative inductive effect group or negative resonance effect group, right. तो जब negative inductive effect वाला group अटैक होगा, अटैक करेगा, और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट वाला ग्रुप अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, किससे, कार्बेनाइन से, और फिर आपका कार्बेनाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और अगर स्टेबल होगा तो फिर बन जाएगा, अगर स्टेबल नहीं होता है तो वो इंटरमीडिएट नहीं बनता, राइट। तो यू वांट स्टेबल इंटरमीडिएट, बिकॉज यू वांट स्टेबल इंटरमीडिएट, हाउ इट इज पॉसिबल, इफ यू take their electron withdrawing group along with benzene, right. So if you take nitrobenzene, so then their negative conjugation, right, you can see here negative conjugation and negative inductive effect, right. So ये negative electron withdrawing group है, and because it attach on benzene, so benzene also withdraw electron from this group, right. So you can see if this is our compound CS2Cl and here nitrobenzene as a negative resonance and negative inductive effect group, then if they react with OET, right, so first hydrogen will remove out, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, and then Cl, right, and then they convert into this types of alkene. You can see their mechanism, अगर आप mechanism देखोगे तो you can see here mechanism. What is first step, you can see your OH, right, OH of alcohol react with hydrogen, and then H2O will remove out, right, and here negative charge will come, right, यहाँ पे negative charge आ जाएगा, CH2Cl, here CH2Cl as it is, right, and here you know, this is benzening and nitro group, right. You know, nitro group is always electron withdrawing group, so they withdraw electron from this carbene, वो क्या करेगा, carbene से electron को withdraw करेगा, Cl also electron withdrawing group, right. तो ये क्या करेगा, ये जो nitro group है और benzene ring है, ये electron को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे यहाँ पे electron density कम हो जाएगी, and then this carbene behave like a stable carbene, right. तो basic requirement for stabilization of intermediate is negative R and negative I effect, right. तो ये जो nitrobenzene है, if they attach on this, then it feel much more stable and they can easily produce, right. तो ये easily बन सकता है, right, अगर यहाँ पे क्या हो, कोई electron withdrawing group benzene ring के साथ हो। Once it form, एक बार ये बन जाए तो फिर क्या होगा, ये जो Cl होगा, they will remove out, Cl minus will remove out, and then this negative charge convert into, then this negative charge convert into double bond, ये negative charge जो होगा वो किस में convert हो जाएगा, double bond में convert हो जाएगा, and then you can see they convert into alkene, right. So what is important point related to this mechanism, formation of carbene, right, formation of carbene, carbene का बनना इसका सबसे important point है, कार्बेनाइन का बनना इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कार्बेनाइन इसमें बनता है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, राइट। और इस रिएक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट,
नाइट्रो ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप। और अगर वो बेंजीन के साथ हो तो और भी बेटर है, देन दिस इज मच बेटर बिकॉज दे आर नॉट ओनली माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बट आल्सो माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। तो दोनों इफेक्ट होंगे तो बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। तो दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ, दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ E1CB, राइट। एक और मैकेनिज्म होती है नेगेटिव इंडक्ट E1 EI, यू कैन सी नेक्स्ट वन मैकेनिज्म, दिस इज EI। EI जैसे मैंने उसमें आपको SNI बताया था, वैसे EI को भी देख सकते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, EI जो मैकेनिज्म होती है ये थोड़ा सा और भी एडवांस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दिस मैकेनिज्म मूव थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दिस मैकेनिज्म मूव थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा क्या होता है, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है और वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, राइट। हियर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट, राइट। नाउ 5 to 6 membered cyclic transition state form during this mechanism, 5 to 6 membered cyclic transition state form, राइट। तो ये जो मैकेनिज्म होती है वो 5 to 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर के जाती है, राइट, थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और 5 to 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलरिटी मींस विद इन वन मॉलिक्यूल सेम कंप्लीट रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, सारी रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट थिंग इज थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और 5 to 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो प्रोसेस होती है ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या 5 to 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होके चलती है, राइट। इसमें मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट, केवल एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का इसमें पार्टिसिपेट करता है। एंड इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलरिटी मींस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल, pyrolytic elimination of oxide of amine produce alkene, right? So this is oxide of amine, right? So amine देखो N with double Me, right? And here CH2, right? So this is amine, right? And here oxide that connected with oxygen, so it is oxide. So this is oxide, this is alkyl group, this is alkyl group, this methyl also alkyl, this is alkyl, right? So these three alkyl group, right? And here one oxygen, right? And it is, you can see 1 2 3 4 5, right? So they that convert into 1 2 3 4 5 members cyclic transition state, right? So you can see this compound, right, oxide of amine give a EI mechanism, right? And during this process they convert into alkene, right? And this is called pyrolytic elimination, this is called pyrolytic elimination. नाउ हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, अब ये रिएक्शन कैसे होती है आप देखिए, ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट गिव देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, राइट, देन देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, then there is a single bond. Now this bond, right, this the bond between hydrogen and carbon move in this direction, that move in this direction, ये bond इस direction में move करेगा, then double bond formed between carbon and this, right? And the next this bond, right, this sigma bond, right, between carbon and nitrogen move in this direction, right? So then you can see when this bond move in this direction, right, or come at nitrogen, not move in this direction, you can say come at nitrogen, because nitrogen पे क्या है, positive charge, right? So they required lone pair of electron, so this sigma bond convert into lone pair of electron, right? And this negative charge convert into a sigma bond between hydrogen, and this sigma bond move in this direction, right? So it means bond break between carbon and hydrogen, bond formation between oxygen and hydrogen, right? And you can see now this bond break start because the sigma bond convert into a lone pair of electron at nitrogen, right? So in this way this transition state and bond formation between carbon and carbon, तो यहाँ पे bond formation start हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा,
राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट होगा. इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज अबाउट 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, राइट. तो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से, and at the end, right, this bond will completely break, this bond will completely break, this bond will form, this bond will form, then they convert into alkene, then they convert into alkene. फिर ये क्या बन जाएगा, alkene बन जाएगा. Then they convert into alkene, you can see, right, Cr2 and CH2 and Me2, right, this Me2 NOH will form, right. So this is how we produce alkene from oxide of imine. It goes through EI mechanism. It goes through EI mechanism. So what about EI mechanism, right? And what about the steps in EI mechanism? This is complete about that, right? So these are important elimination reaction. You people know these are important elimination reaction. One is called E1 mechanism, right? Same like SN1 type mechanism. Then second is E2 type mechanism, same like SN2 type mechanism. Then next one is EI mechanism, right? It is similar to SEI type mechanism, right? And fourth one is that is E1CB mechanism, that is advanced mechanism or little bit different mechanism, right? So these are 4 types of elimination mechanism. We should clear elimination mechanism because in your syllabus, आपके syllabus में substitution versus elimination लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी कि what about the types of elimination mechanism and how you compare elimination mechanism with a substitution mechanism. Important point क्या है, strong base required for elimination reaction. जो elimination reaction होती है उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है आपको, strong base चाहिए पड़ता है, right? और जो आपकी substitution reaction होती है उसमें क्या होता है, weak base होता है, right? Now after that you can see next point of discussion. This is about aryl halide. Aryl halide means if benzene connected with halogen, it may be I, it may be Cl, it may be Br, it may be F, right? So it is fluoro, bromo, ido, right? Benzene, right? This is called aryl halide. Now our topic of discussion is aryl halide. What do we mean by aryl halide? So this is aryl halide when aryl group connected with chloro, fluoro, bromo, ido, right? So then this is called aryl halide. So the important point in your syllabus related to aryl halide is, right, nucleophilic substitution, right, when strong electron with nucleophilic substitution reaction in aromatic compound, right? Electrophilic substitution reaction in aromatic compound we have already discussed. इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में. इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में. उससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट फर्स्ट, राइट? इफ वी टॉक अबाउट, इफ वी कंपेयर, राइट, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट halides. First one is alkyl halide, then second one is allyl halide, then third one is vinyl halide, then fourth one is benzyl halide, and last one is aryl halide, right? So how do we compare relative reactivity of different halides, right? They may be alkyl, they may be allyl, then vinyl, then benzyl, then aryl, right? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, and what is reason behind that. For example, you can see this is your benzyl halide. Benzyl means benzene connected with CH2 alkyl group and that connected with halogen. So this is called benzyl halide, right? When benzene connected with CH2 and then Cl. This is called benzyl halide. Or alkyl halide, you people already know, primary, secondary, tertiary alkyl or methyl halide, right? This is called alkyl halide. Then this is allyl halide, right? So when double bond and then next carbon Cl, right? So this is called allyl halide, right? And then vinyl halide, CH2 double bond CH2 Cl, right? So these are 4 category, 1, 2, 3, 4, 5 category, right? Benzyl, aryl, vinyl, allyl, right, and alkyl, right? So these are 1, 2, 3, 4, right? And 5 category also when benzene connected with halogen. I already discussed aryl halide structure, right? So benzene when direct connected with halogen, then that is called aryl halide. So how do we differentiate reactivity of all these, right? So you can see if allyl halide,
if allyl halide, this is allyl halide, तो these two position are active position. ये दो पोजीशन क्या होती है allyl halide में, एक्टिव पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन. Because if hydrogen move from this position, then positive charge come here, right? And then they can give, right, resonance structure. Because if positive charge come at this point, then pi bond इस साइड को मूव करेगा and positive charge यहाँ पे आएगा. It means allyl compound give टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इसका मतलब हो गया एलाइल क्या करते थे, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देता है. अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर को आ जाएगा और फिर प्लस चार्ज यहाँ पे. तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो एलाइल क्या होते हैं, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, राइट. तो एलाइल गिव टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट, व्हेन दे लूज H प्लस आयन. जब वो H प्लस आयन को देता है तो फिर एलाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एलाइल जो कार्बोकेटाइन बनाएगा वो क्या होगा, उस कार्बोकेटाइन पे क्या आ जाएगा, वो कार्बोकेटाइन क्या बनाएगा, दो रेजोनेंस, दे गिव टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो फिर वो क्या देगा, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देगा, राइट, दैट गिव टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इट मींस एलाइल इज स्टेबल. यू कैन से दैट एलाइल क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रहा है, राइट. एलाइल कार्बोकेटाइन जो होगा वो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देगा, इसलिए वो क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट. तो इट मींस वो दे सकता है, एक पाथ. सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट विनाइल, तो विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश Cl, राइट. तो इफ Cl विल रिमूव आउट, अगर Cl निकल जाता है, Cl माइनस निकल जाता है, राइट, तो फिर क्या होगा, ये कोई भी, बिकॉज प्लस चार्ज कम एट दिस कार्बन, राइट, एंड देन दे कैन नॉट गिव एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर. और उसके बाद वो कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को नहीं देगा, राइट. दे कैन नॉट गिव एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट. तो ये कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर. एलाइल में मैंने कहा अगर इस पोजीशन पे Cl है, या इस पोजीशन, एलाइल हैलाइड की बात करें, एलाइल की बात नहीं कर रहे, एलाइल हाइड्रोजन की बात नहीं करें, एलाइल हैलाइड की बात. इफ हियर Cl और हियर Cl, राइट, इधर या इधर Cl होगा, Cl माइनस निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर को रोटेट करेगा, फिर दूसरे टाइम पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. So there is two possibility for positive charge. Same if Cl move out from here, then plus charge come here, right? And then this pi bond move this side, and then plus charge come here, right? It means there is two resonance structure possibility with allyl carbocation, two resonance structure possibility, right? But in vinyl there is no possibility of any resonance structure. वहां पे किसी भी resonance structure की कोई भी possibility नहीं होती है, right? This is reason vinyl not interested to lose their Cl minus ion. विनाइल इंटरेस्टेड नहीं है उसके Cl को देने में, क्योंकि उसको पता है Cl दे देगा तो उसके बाद वो स्टेबल नहीं रहेगा, राइट. तो दिस इज रीजन एलाइल कहने का अर्थ, एलाइल इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल. विनाइल कम रिएक्टिव होगा, एलाइल क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा. उसके बाद नेक्स्ट बेंजाइल. इफ वी टॉक अबाउट बेंजाइल, तो बेंजाइल में क्या होता है, इफ बेंजाइल गिव Cl माइनस, अगर बेंजाइल क्या करेगा, Cl माइनस देगा. अगर बेंजाइल क्या करेगा, Cl माइनस देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस. अब ये प्लस कभी ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएगा, कभी पैरा पोजीशन पे चले जाएगा, कभी ऑर्थो, right. So it means they give three resonance structure. It means they give three. When benzyl halide lose their Cl minus, then they give three resonance structure. तो फिर क्या देगा, three resonance structure को दे देगा. They give three resonance structure, not four resonance. one resonance structure तो ऑलरेडी है, क्योंकि CH2 पे प्लस चार्ज होगा तो एक वो हो गया, और फिर दो ऑर्थो एक पैरा, फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इट मींस बेंजाइल कार्बोकेटाइन गिव फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होगा वो फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देगा. ये मैंने कई बार आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रखे हैं, तो सो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दैट मोर एंड मोर टाइम, राइट. तो ये इस तरह से फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देगा. अगर आप एल्काइल की बात करोगे तो एल्काइल भी स्टेबल होता है. आपको पता है जो टर्सरी होता है दैट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल, राइट. तो अगर मैं टर्सरी की बात करूं तो टर्सरी इज मोर स्टेबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म, एंड सेकंड इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म की वजह से जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है वो भी इजिली Cl माइनस दे करके स्टेबल हो जाता है, राइट. तो इन दिस वे इफ आई टॉक अबाउट एराइल, अब मैं एराइल की बात करता हूं. तो एराइल give four resonance, aryl give four resonance structure, double bond between Cl and positive charge at Cl. होता क्या है, बिकॉज X पे क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. within 1 minute the link will expire, then we will rejoin at same link, right. तो आप देखिए Cl पे क्या होता है,
थ्री लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 देन 2 देन 3 लॉन पेयर। तो Cl क्या करता है, हमेशा बेंजीन को एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, एंड देन देयर इज ए डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जाता है डबल बॉन्ड, राइट, एंड देन दिस पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पोजीशन, राइट। तो X पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, एंड Cl पे क्या होता है, सॉरी कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दैट नेगेटिव चार्ज समटाइम हियर समटाइम